So in this continuation of test your understanding or the exam kit of standard costing. So basically standard costing variance analysis. Previously we had completed it till here. Now, like a company operates whenever we read a question, we need to go through this first. What was the actual expenditure on the fixed overheads last month? So what is the actual expenditure on fixed overheads is the question. So if you just see in here, a company operates a standard marginal costing system. Last month, its actual fixed overhead expenditure was 10% above the budgeted, resulting in the fixed overhead expenditure variance of $36,000. We need to find out the actual expenditure on fixed overheads last month. So to find that out, what do we need to do? How much is it saying 10% was more? What does it mean? Just understand it here. See, fixed overhead expenditure variance is 36,000. So now the variance is 36,000. And how much is it? How much percentage is it? 10% above the resulting. Actual fixed overhead is above 10%. And the variance is actually more only. So what we can do, how much is the main variance we need to find out first. So it will be 36,000 divided by 10%. When we divide it by 10%, we'll get what is the 100%. So 100% is divided by 10%, it would be 360,000. Now this 360,000 is 100%. And this is actually our budget. Yes or no? This is our budget. Now, and this is our budget. What has happened? This 36,000 is a adverse variance because it is more than above. So it is adverse. So what I can do, I have my budgeted as 3,60,000 and it is 36,000 more or 10% more, whatever it is. So add this 36,000 is equals to how much? 3,96,000. 3,96,000. Did you guys get it? Hello. Yes, sir. All right. Let's move towards the next question. What was the fixed overhead volume variance? What are we calculating? Volume variance of the fixed overhead. So let us just look into the material here. Fixed overhead expenditure variance is here. Fixed overhead volume variance. See, actual units into fixed overhead absorption rate per unit less budgeted expenditure. Or what we can do, standard hours for actual production into fixed overhead absorption rate per standard hour less budgeted expenditure. So either it is hours worked or units produced. So let us just see in here in the question. What was the fixed overhead volume variance? Ab budgeted fixed overhead cost is already given. How much is it? 1,20,000. Okay. Budgeted production units is how much? 20,000. And the actual fixed overhead cost is 150,000. Now, actual fixed overhead cost we are having.
So what is the rate? How do we find it out? Let us just see in the problem in here, like actual units into fixed overhead absorption rate per unit. अगर हम यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर जा रहे हैं तो एक्चुअल यूनिट्स तो हमारे पास कितने हैं 21,000. ओके. अब है क्या हमारा व्हाट इज आवर बजटेड रेट. आवर बजटेड रेट इज व्हाट. बजटेड का क्या डिवाइड कर लो 1,20,000 20,000 दीवाना divided by 20,000. How much is it? 1,20,000 by 20,000 is 6. I guess there with me. फिर से फॉर्मूला देखेंगे हम लोग. Actual units into fixed overhead absorption rate per unit. Now fixed overhead absorption rate is 6 and we have 21,000 units here. When this is the case, it is 21,000 into 6. You guys having calculator? 21,000 into 6 is equal to 21,000 into 6. 1,26,000. And what's here? Our budgeted fixed overhead cost is 1,20,000. So what is the difference here? 6,000. Now this 6,000 variance, is it favorable or unfavorable? Tell me. Favorable. अगर हम options देख रहे हैं, if we are seeing the option, we are only having one option which is favorable. The reason being is just when we are comparing it with here, we are able to do it for more number of units. That's the only reason we are able to have a favorable variance. That fine? Sir, isn't this formula absorb fixed overheads minus budgeted fixed overheads? Yes. So, the absorbed fixed overheads is 126. Yes. Okay. Yeah. Budgeted fixed overhead is 120. And how did we calculate this 126? We just divided it, right? We just took the budgeted rate, which 120 by 20. Budgeted fixed production divided by budgeted production. मतलब cost divided by units. We got the per unit cost. Is that fine? Yes. Let's move forward. What was the fixed overhead capacity variance for the period? Now, fixed overhead capacity variance for the period is the question. अब यहाँ पे let's read the question now. मतलब first requirement पढ़ लिया हमने. We understood what is capacity variance. Again here. अब ये आप लोग के बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे स्टडी टेक्स्ट खोला हूँ. Anyhow, in your main sessions, main exam, you won't be having it, but still just understand. Actual hours into fixed overhead absorption rate per hour less budgeted expenditure will give us what? Overhead capacity variance. So let's go here. A company budgeted to make 30,000 units of product P. Each unit was expected to take 4 hours to make and budgeted fixed overhead expenditure was 8,40,000. Actual production of P in the period was 32,000, which took 123,000 hours to make. Actual fixed overhead expenditure was 885,600. अब हमको मालूम करना है कैपेसिटी वेरिएंस. तो सवाल तो समझ में आ गया ना अभी तक. एक यूनिट को कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे.
और बजट कितना कर रहे हैं 30,000 का, तो फिर आपके बजटेड आवर्स कितने हुए 1,20,000। यस और नो। और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर मतलब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर कितना है 8,40,000। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं 8,40,000 by 1,20,000 which is number of hours, I will get my budgeted overhead absorption rate, fixed overhead absorption rate to be how much 8,40,000. 7. How much 7. 7? Yeah, I also got 7. अब यहाँ पे 7 आ गया मेरे पास, ये क्या है फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अब फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कहाँ है यहाँ पे 1,23,000। यस और नो। Yes. तो 1,23,000 into 7 is equals to how much 1,23,000 into 7 is equals to how much 8,61,000. 8,61,000। और मेरा बजटेड प्रोडक्शन है कितना 8,85,600. वो तो एक्चुअल है। नहीं, हाँ, बजटेड कितना है budgeted 1,20,000 into 7. Okay, 840. सॉरी देयर राइट 840। क्या है डिफरेंस दोनों में 861 माइनस 840 21,000। अब ये 21,000 तो कंफर्म है ही है, अगर हम ऑप्शंस भी देख लें तो 21,000 तो है ही। अब वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल टेल मी। Favorable or unfavorable? For that, let me just show you the formula again. Let's just see the formula again. Actual hours into fixed overhead absorption rate, मतलब कि आप जो एक्चुअल घंटे लगा रहे हैं, अगर सपोज आप उतने घंटे काम कर रहे हैं, सपोज द नंबर ऑफ आवर्स यू आर वर्किंग, अगर हमारे हिसाब से आपको कितने मिलने चाहिए, जैसे कि फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट क्या है 7, आपको इतने मिलने चाहिए, बट आपको मिल कितने रहे हैं, हाउ मच यू आर गेटिंग, sorry, how much was the budgeted? We have around 840. You incurred how much? So here, understand this. You are incurring it for more number of hours. Here, this 840 is for how many hours? 1,20,000 hours. ये जो है सो कम आवर्स का है दिस अमाउंट, सो इट विल बी, मतलब ये ज्यादा 1,23,000 hours you are working. Here you are working how much 1,20,000 hours. So it will become a favorable variance. Are you guys there with me? Favorable. अब ये समझ लो, आपको फॉर्मूला समझना है, क्वेश्चन भी समझना है, उसके बाद उसको आंसर करना है। खाली अगर थंब रूल के ऊपर जाएंगे कि अच्छा ये कितने का है, माइनस आया प्लस आया कैसा करेंगे हम लोग, उसमें आपको उतना समझ नहीं आएगा, उसमें कंफ्यूजन ही होगा बस। ओके, are you guys there with me? Yes. चलो नेक्स्ट।
What was the actual number of units produced? What was the actual number of units produced? ठीक है, अब आ गए क्वेश्चन पे. QRL uses standard absorption costing system. The following details have been extracted from its budgeting for April 2007. Fixed production overhead cost कितना है? 48,000. Production units कितने हैं? 4,800. In April 2007, the fixed production overhead cost was under absorbed by 8,000 and fixed production overhead expenditure variance was 2,000 adverse. अब actual number of units कितने produce हुए ये बताना है आपको. You guys there with me? I want you guys to answer this. Help me answer this. Fast. Budgeted fixed overhead है कितना? Fixed production overhead cost कितना है? 48,000. अब ये 48,000 में फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है? 2,000 एडवर्स. तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ? 50,000. ओवरहेड 50,000 हो गया ना? You guys there with me? हेलो. Yes, sir. अब जब हमारे पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इतना आ गया, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्वेश्चन में? 8,000 जो है क्या है? अंडर अब्सॉर्ब्ड है. जब ये 8,000 अंडर अब्सॉर्ब्ड है, इट मींस आई नीड टू जस्ट डिडक्ट इट. 50,000 माइनस 8,000 कितना हो गया? 42,000. अब ये जो 42,000 है, व्हाट इज द रेट? फिक्स्ड प्रोडक्शन रेट है कितना? बजटेड रेट कितना है? 10. 10. 48,000 डिवाइड बाय 4,800. 10. अब वही 42,000 number of units divided by 10 will give us how much? 4,200. ऑप्शन है यहाँ पे. यस. अभी देखो ये स्टेप बाय स्टेप करना है हमको. क्या क्या कैसा कैसा करना है. देखो 2,000 एडवर्ड्स है, हमको फिक्स प्रोडक्शन एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है मालूम हो गया. फिर वो अंडर अब्जॉर्ब था, ठीक है, अंडर अब्जॉर्प्शन का इफेक्ट निकाल दो उसका. We removed it. Now once we have removed it, then we just divide it by our rate, and once we divide it by the rate, we'll get the actual number of units. Is that clear? Yes, sir. Understand this. आपको स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी है ये. और ये करने से पहले see, if it is highly recommended that you guys go through this session. मतलब कि क्यों हो रहा है ये एडवर्स, क्यों हो रहा है ये फेवरेबल. आप बस ये समझो कि आपका बजटेड खर्चा कितना है. आप बजटेड खर्चा, सपोज आप इतने घंटे काम करोगे तो इतना मेरा खर्चा होगा बोल के आप हिसाब लगा रहे हो. तो उसी में फिर एक्चुअली आपके जेब से कितने जा रहे हैं. Are you understanding this? First, what you are doing, you are just calculating what your expenditure can be or will be. That is the budget. फिर वो बजट के बाद, after that budget, you are calculating your actual expenditure. And once you are calculating your actual expenditure, तो आप जो कैलकुलेट करे थे और इसमें फर्क क्या आ रहा है. अगर आपका खर्चा बढ़ गया और उतने ही यूनिट्स है तो वो अनफेवरेबल हो गया. और वही आपका खर्चा
उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए तो थोड़ा अब्जॉर्प्शन अच्छा हो गया उसमें, तो वहां पे क्या हो गया आपका फेवरेबल वेरिएंस हो गया। आई गेस अंडरस्टैंडिंग दिस, उसकी लॉजिक समझो, बैक स्टोरी समझो इसकी, तो ही आसानी होगी। हेलो। ऑलराइट, तो अब ये इतने क्वेश्चंस तो हम लोग कर रहे हैं, बट आई वांट यू गाइस टू डू इट। अब जैसे कि ये देखो, ये थियरी क्वेश्चंस है थोड़े, और थोड़े एक्चुअल रेट पे। आई वांट यू गाइस टू डू दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस यहां तक आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 300, मतलब ये एंड तक 376 तक एटलीस्ट ट्राई करो कल के सेशन से पहले। ये थ्री until 376 you have 24 hours to do this. You can go see the answer also, try doing it by yourself. उसके बाद in tomorrow's session we will again we will continue doing these questions, and also we'll go towards the big questions like 10 mark questions जो सेक्शन बी में आएंगे आपको, ठीक है? Questions which are going to come in section B, 10 mark questions for standard costing, we will do that also. But until then, I require you guys to do these by yourself. Try it, just try करो। तो क्या होगा, आप भी समझोगे अच्छा ऐसा कैसे अप्लाई करूं फॉर्मूला, हाउ इट वुड बी बेटर फॉर मी, ये फॉर्मूला को मैं अपने तरफ से कैसे समझूं, मीन्स हाउ इट वुड बी गुड फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ऐसे सीखने की कोशिश करो। इज दैट फाइन? हेलो। Yes, sir. Okay, try these questions by yourself. Tomorrow again we will be continuing from these questions, but I want you guys to do something of your homework, just be a bit ahead of it, then we'll be on par with it. Okay, I'm ending this session now.